Hello and welcome. Plenty to talk about. Plenty to talk about. So who is applying finally? Has Gautam Gambhir applied? क्या उन्होंने apply किया है? अगर गौतम गंभीर नहीं अप्लाई करते हैं या एप्लीकेशन डेडलाइन मिस कर जाते हैं तो क्या? बीसीसीआई के पास और कौन कौन सा कैंडिडेट्स है? क्या भारतीय हेड कोच का ये राउंड ऑफ सर्च ज्यादा लंबा खींचेगा? What about the Indian team that is kind of training in New York already? We've seen a lot of Instagram posts and posts from Surya and some of the others and Shivam Dubey. They were in Times Square. What about the training of the Indian team? Is Virat Kohli, very importantly, is Virat Kohli going to be playing the warm-up game? Because Yuzvendra Chahal and some of the other boys, they have left. Yashasvi Jaiswal, they have left for New York. Hardik Pandya has already moved in from London to New York. Will Virat Kohli be playing the warm-up match or will he not be playing the warm-up match? So there's plenty to talk about as part of this show, and we will obviously take some of your questions. So let's start with the coaches discussion again. So the coaches discussion, I've got quite a few questions already. And the first point, a lot of people asked me about candidature. Listen, I am very clear at this point in time the prerequisites भारतीय कोच बनने के लिए अभी आपको एक जबरदस्त मैन मैनेजर का जरूरत है. आप तो विराट कोहली को जाकर बैटिंग नहीं सिखाओगे. सर प्लीज रिप्लाई, जीजी ने अप्लाई किया क्या है ऑफिशियली? आलोक खांडेलवाल, वेरी गुड क्वेश्चन. And BCCI and Gautam Gambhir are both mum on it. Alok, this is exactly what everybody is asking because the deadline was yesterday, and we have also tried to find that out. Officially, there's no yes or no on this, but the thing is, Gautam Gambhir has absolutely not said that he's not interested in this job. And that is of paramount importance. He had a meeting with Jay Shah. Gautam Gambhir, being the straight talker that he is, he also had a meeting with Shah Rukh Khan. Now the question mark is, what about that meeting with Shah Rukh Khan? Is there a clarity on KKR? Let me tell you two, three things, Alok. One, Gautam Gambhir doesn't want to do this job for money, and I can tell you that. गौतम गंभीर को मैं जितना जानता हूं और बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं, गौतम गंभीर ये काम पैसे के लिए तो नहीं कर रहे हैं. उनको ये कोचिंग करके पैसे के लिए तो गौतम गंभीर ये काम नहीं कर रहे हैं. What about VVS Lakshman Boryada? Shagnik, no. From what I know, VVS Lakshman could have easily been the BCCI's early choice, but VVS Lakshman moved his base from Bengaluru to Hyderabad, from Hyderabad to Bengaluru with a young family, and he is more intent on doing the NCA job rather than taking up the job of the Indian team at this point in time, Shagni. So that is our understanding, and because of that, Gautam Gambhir has emerged as the front runner clearly. If you ask me, at this point in time, I am not seeing any candidate, Indian or international, who, if Gautam Gambhir applies, uh, I don't think anybody can come into the mix of or can compete with a Gautam Gambhir. If Gambhir don't apply, who's your choice? This is a very good question, Alok. I actually don't see this. And what is the rush? Because you know what, the Indian team after the World Cup तो राहुल द्रविड़ के साथ खेल रहे हो आप. उसके बाद आप जिम्बाब्वे जा रहे हो. जिम्बाब्वे तो आप कोई भी एनसीए कोच के साथ भेजोगे, लक्ष्मण के साथ भी भेज सकते हो, कोई भी जूनियर कोच के साथ भी भेज सकते हो. आप तो रोहित विराट ये टीम को आप भेजोगे नहीं. आप तो एक सेकंड टीम या ए टीम या जूनियर टीम, रिलेटिवली यंगर टीम को आप भेजोगे तो जिम्बाब्वे. उसके बाद श्रीलंका का जो दौरा है, वहां भी आप सेकंड साइड ही भेजोगे. क्लियरली आप तो ये रोहित शर्मा विराट कोहली वाला टीम को आप भेजोगे नहीं. एज अ रिजल्ट, अगर आप शांति से सोचें, आपके पास जुलाई एंड अगस्त ये दोनों महीना है, जून एंड जुलाई दोनों महीना आपके पास है टू फिगर इट आउट. सो ऐसा जल्दी हड़बड़ी बीसीसीआई के पास नहीं है. हम लोग जो सोच रहे हैं, अगर कल अप्लाई 3,000 एप्लीकेशन पड़ा है, कोई लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम से गूगल फॉर्म भर दिया है, किसी ने अमित शाह जी के नाम से भर दिया है, किसी ने तेंदुलकर के नाम से भर दिया है. हमारे देश में पागल लोग बहुत हैं. सो ऐसे लोग काम तो गौतम गंभीर के नाम से भी कई लोग भर दिए होंगे. तो अभी बीसीसीआई को जांचना पड़ेगा कि गौतम गंभीर रियलिटी में कौन सा है, ये गौतम गंभीर वाला फॉर्म कौन सा है, ये कौन देखेगा. हैविंग सेड दैट, अगर देखिए ये तो कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है. तो अगर गौती के साथ
बात हुआ है, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता है कि गौतम गंभीर के साथ ना बात हुआ हो, क्योंकि इतना जो स्पेकुलेशन चल रहा है, गौतम गंभीर क्लियरली उसको नकार देते, सेइंग नो दिस इज नॉट हैपनिंग, उसने एक बार भी नहीं कहा। सो गौतम गंभीर अगर नहीं होते, वो रास्ता तय करना 2 महीने के बाद का बात, या हमारे पास ऐसा कोई और कैंडिडेट अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है। गौतम गंभीर को कौन हरा पाएगा? शाग्निक, आलोक, ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग, अगर महेंद्र सिंह धोनी अपना नाम डाल देते हैं तो कंपटीशन होगा। बट बाकी एक नाम मेरे को बताइए, आप लोग भी तो क्रिकेट फॉलो करते हो, एक नाम मेरे को बताइए जो गौतम गंभीर को हरा सकता है। कोई नहीं हरा सकता है। भरत अरुण को मैंने एक सवाल पूछा था कल, और वो इंटरव्यू आज हम लोगों ने चला दिया है 12 बजे, आप जरूर देख सकते हैं रेड स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स में, यूट्यूब में, ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में भी है। भरत अरुण का जो इंटरव्यू हमारे साथ था, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है। उन्होंने सुनील नारायण के बारे में बात किया है, श्रेयस अय्यर का कैप्टनसी के बारे में, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा क्या भारत के लिए खेल सकते हैं, इसके बारे में भी जिक्र किया उन्होंने। उन्होंने हर चीज पर बात किया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली गौतम गंभीर पे उन्होंने डिटेल में चर्चा किया मेरे साथ। और उन्होंने दो चीज कहा। वन, मैं सवाल पूछने के पहले ही उन्होंने कह दिया कि गौतम गंभीर एक प्लेयर्स मैन है, गौतम गंभीर के पास कोई भी प्लेयर कभी भी जा सकते हैं सलाह के लिए, सपोर्ट के लिए। And said that Gautam Gambhir has every credential to become the India coach. Is Saurav Ganguly standing in the race of coach? No, absolutely not. अगर नरेंद्र मोदी कल आके लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़े हो जाए, ये कैसा होगा? सौरव गांगुली बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे, अभी दिल्ली कैपिटल्स का ओनर भी है, उनका स्टेक भी है वहां पे। अगर आज की डेट में वो जाके इंडिया कोच के लिए लड़ जाते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर के बाद स्कूल का हेडमास्टर बन जाना वैसे ही हो जाता है। सो सौरव गांगुली तो वहाँ कैंडिडेट नहीं है। हाँ, हालांकि सौरव गांगुली ग्राउंड में बिलोंग जरूर करते हैं और उनको सबसे अच्छा वही लगता है। और ये सवाल जो आपने पूछा, ये करेक्ट सवाल है, क्योंकि सौरव गांगुली always wants to be present in the field. That is his domain. But is he in the race? No, he is absolutely not in the race. And can he be in the race in the near future? The answer is a blanket no, because he will have a conflict because of his relationship with Delhi Capitals, Pretoria Capitals, and the rest. क्या कोई फॉरेन कोच हो सकता है? 100% हो सकता है आलोक, बट जय शाह साहब ने तो ऑलरेडी कह दिया है दैट बीसीसीआई डिड नॉट अप्रोच अ सिंगल फॉरेनर। वो क्या रिकी पॉन्टिंग हो जाए, या एंडी फ्लावर हो, या जस्टिन लैंगर हो, या कोई भी हो, ऐसे किसी कैंडिडेट को, ऑस्ट्रेलियन कैंडिडेट या कोई भी कैंडिडेट को बीसीसीआई ने अप्रोच नहीं किया। मुझे एक चीज बोलना है आप लोगों को, ये जो हर समय मैं सुनता हूँ ना कि रिकी पॉन्टिंग, जस्टिन लैंगर, एंडी फ्लावर की, इंडियन टीम का ये जो जॉब है, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है भाई। क्या टाइम कंज्यूमिंग है भाई? तुम तो बिग बैश में कोचिंग कराते हो, साउथ अफ्रीकन लीग में कोचिंग कराते हो, एंडी फ्लावर के बारे में बोल रहा हूँ, बहुत सारे टीम को कोचिंग कराते हैं, ये ग्लोबल लीग में घूम घूम के कोचिंग कराते हैं, तो कितना टाइम जाता है? बिग बैश में 2 महीना, साउथ अफ्रीका में 1-1.5 महीना, अगर आप 2 और लीग कर ले, पूरा साल आप 6-7 महीना तो यहीं पे चला गया। सो द रियल रीजन इज मनी। आपको ये फ्रेंचाइज कोचिंग करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। फ्रेंचाइज कोच 5-6 करोड़ रुपया, 4-5 करोड़ रुपया इजीली मिल जाता है। भारतीय कोच के लिए आपको उस पैसे से ज्यादा तो मिलेगा नहीं, थोड़ा सा मिलेगा ज्यादा। बाकी आप 3-4 लीग इसके साथ अगर जोड़ दें, तो आप डबल पैसा कमा सकते हैं। तो बात, मुद्दा पैसे पे आके रुक जाता है। और इसी कारण मुझे ये लगता है कि जो फॉरेन कोचेस है, ये गौतम गंभीर छोड़ के जो नाम आ रहे थे, जस्टिन लैंगर, रिकी पॉन्टिंग एटसेट्रा, let us face it, I mean, the kind of money that they make from franchise sport now is a hell of a lot of money, and then everybody is entitled to making money. My point is not that. My point is say that it is a money call. It is not a, time nahi hai, usa bekar hai. Is Gigi becoming head coach? How would the environment of the dressing room, Virat Kohli, legendary, बहुत important सवाल। जब स्टीव वो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन थे, शेन वॉर्न क्या उस ड्रेसिंग रूम में थे या नहीं थे? आपको क्या लगता है, कपिल देव और सुनील गावस्कर हर समय का दोस्त थे क्या? गावस्कर साहब और कपिल देव हर समय दोस्त थे क्या? ना। मैं गैरी कर्स्टन का किस्सा सुना देता हूँ। 2011 वर्ल्ड कप पाकिस्तान मैच के बाद उस नेक्स्ट मॉर्निंग गैरी कर्स्टन अपने होटल में बैठ के ब्रेकफास्ट खा रहे थे, और वो ब्रेकफास्ट खाने के समय मैं वहां पहुंचा, एंड आई टोल्ड हिम, यू क्रिएटेड अ ग्रेट टीम। सो गैरी मेरे तरफ देखे और मेरे से कहा कि आपको क्या लगता है, यू थिंक ऑल ऑफ दीज बॉयज आर फ्रेंड्स? आई सेड व्हाट डू यू मीन? एंड ही सेड लुक,
I don't even care whether they are friends or who goes out with each other or who dines with each other socially or mixes with each other socially. The point is, when the last catch goes up, whoever is under that ball should take that catch for India. So whether or not Rohit Sharma likes Gautam Gambhir or Virat Kohli likes Gautam Gambhir is not even the yardstick. The yardstick is all of them are doing a job collectively for an entity called India, and that's what matters. Khatam. आप लोग इंडिया के लिए खेल रहे हो, इंडिया का कोच है, इंडिया के लिए करना है, वहां पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स एक्सेट्रा डजंट मैटर, एंड दीज आर thoroughbred professionals, legends of sport who will absolutely get that point. By the way, रोहित शर्मा के साथ गौतम गंभीर का रिलेशनशिप फैंटास्टिक है. गौतम गंभीर के साथ रोहित शर्मा का जो रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है. गौतम गंभीर ने बहुत बार बोला है अबाउट रोहित शर्मा, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट that Rohit Sharma has tremendous amount of respect for Gautam Gambhir. So there's no two ways about it. Coming to Virat and Gautam, we have both seen how Virat and Gautam have buried the hatchet, and Virat was on record saying, "I'm not going to give you more masala to create a controversy." Both are thoroughbred professionals. I absolutely don't see Virat Kohli and Gautam Gambhir having any issue if Gautam Gambhir becomes the head coach of the Indian cricket team. You know what? The other reason why I want Gautam Gambhir to become coach. Now, this might sound slightly controversial. In 2 years' time, maybe a Rohit Sharma or a Virat Kohli will have to give way. इस बार हम लोग ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट का सीरीज खेल रहे हैं. आपको याद है 2011-12 जब हम लोग 4 टेस्ट मैच का सीरीज हार गए, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण को जाना पड़ा. अगर हम लोग इस साल और नेक्स्ट साल इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस का सीरीज खेल रहे हैं, अगर ये सीरीज हम हार जाते हैं, मेक नो मिस्टेक, 100% इस टीम से कई प्लेयर्स को जाना पड़ेगा. और ये जो ट्रांजिशन फेज है, जो भी भारत का नेक्स्ट कोच बनेगा उसको ये ट्रांजिशन फेज से उसको बाहर आना पड़ेगा. He'll have to oversee the transition phase, and who else but Gautam Gambhir who can sit a Virat down or Rohit down, somebody else down and say, hello, what is the transition plan, what have you thought about it? He will not be overawed by the presence of any of these people in the Indian dressing room and will talk straight. We have seen what he did with the Kolkata Knight Riders, saying 26th of May. गौतम गंभीर स्ट्रेट टॉक करते हैं, सीधा बात करेंगे, इसीलिए वो फ्रंट रनर 100% है. हाँ, अगर शाहरुख खान उनको रोक देते हैं या कोलकाता नाइट राइडर्स के कारण या पॉलिटिकल कारण अगर वो नहीं लेते हैं, वो अलग बात है. बट अदरवाइज गौतम गंभीर अकॉर्डिंग टू मी इज द फ्रंट रनर of this Indian coaching job. Yes, Ron, what was the question? I missed it. Rahul Chaturvedi, sir, who do you think will play as first choice keeper in the World Cup? Very good question. Very, very good question, Rahul Chaturvedi. And, fire in your questions because I'll take all. Somebody had asked me about the Bengal Pro T20. I'll answer that as well. But let me answer this first. This is a critical one. I think if you take the team, this is my team: Yashasvi Jaiswal, Rohit Sharma, Virat Kohli, Surya Kumar Yadav, and Rishabh Pant. Why Rishabh Pant? Because you've got 3 top order right-handers with 1 left-hander. Here, and then again, you have a Hardik Pandya who will start. So you have 4 top order right-handers and 1 left-hander. So for a start, according to me, it will be Rishabh Pant who will start because of the left-right combination, plus Rishabh Pant will, that's what the flexibility the Indian team will look for. So I think both Sanju Samson and Rishabh Pant are good. Sanju Samson had a reasonable IPL though, and I make this point very clear, the fact that he did not score too many in the business end of the tournament has been a repeat problem with Sanju Samson. So can Sanju Samson hold his own under pressure will be something that we will have to wait and see. But for me, given the reason I've just told you, I think Rishabh Pant will start in the opening. Just like Yashasvi Jaiswal, according to me, will start with Rohit Sharma, with Virat Kohli coming in at 3, Surya Kumar Yadav coming in at 4, Rishabh Pant at 5, Hardik Pandya at 6. That is my top 6 as far as India is concerned. वार्म अप मैच के बाद देखना पड़ेगा कैसे होता है. ध्रुव मित्रा, हेलो दादा, आई थिंक विराट को खेलने की जरूरत नहीं है बिकॉज ही इज इन प्राइम फॉर्म. वार्म अप मैच देखिए, प्राइम फॉर्म आईपीएल में विकेट एक जैसा होगा. अमेरिका में टेम्परेचर 20 डिग्री कम. नंबर 2, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि अमेरिका का जो विकेट्स है वो एडिलेड से सॉइल लाकर बनाया गया है. द कंडीशंस विल बी प्रोफाउंडली डिफरेंट. सो खेलना नहीं पड़ेगा, जरूरत नहीं है.
अगर यही मानना है तो हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्यों नहीं अच्छा करते हैं? विराट और रोहित शर्मा तो दोनों अच्छे फॉर्म में थे, सो हम लोग क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि एक्लेमेटाइजेशन बहुत बड़ा इशू हो जाता है ध्रुव। आप जहीं भी खेलो, जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड भी खेलो, हाँ अगर फैमिली का कोई इशू है, अगर उन्होंने परमिशन लिया है, वो अलग बात है, बट मुझे ये मानना है कि वार्म अप मैचेस अगर पूरा टीम खेल लेता है तो कॉम्बिनेशन, आप ये भी तो देख लो यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा कैसे स्टार्ट दे रहे हैं, उसके बाद विराट आके कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा। सो इन दैट केस आई रियली वांटेड टू सी इंडिया फील्ड इट्स फुल फ्लेजेड साइड on 1st of June against Bangladesh in the first warm-up match. Yes, it's now a different matter that Virat will not be there. And yes, I also agree with you that he has been the best Indian. I'm clear. He was the best Indian batter in the IPL. I'm concerned with Rohit's form, about Hardik's form, but Virat was in super touch. So while I do not disagree with you on that, nor do I dispute, but what I have issues with is, it's a very different climate, it's a very different environment, it's a very different weather, it's a very different soil, and it's a very different pitch. So, if you are in prime form, do you mean you will go to Australia 2 days before a test match and will score 100? Can it happen? Can it ever happen? It can't happen. So that is why the more teams go early, the reason teams go fast, the teams they are already there and start playing their warm up game. So मुझे ये लगता है कि अगर warm up game खेल लेते या खेलना चाहिए था तो अच्छा होता. Bharat Arun should get another chance as bowling coach for India. He has proven his ability. Your take on this? Look, I have great respect for Bharat. अभी आप लोगों को दो स्टोरी सुना देता हूँ. हमारे देश में, मुझे ये बताइए, हमारे देश में वर्कलोड मैनेजमेंट कौन शख्स लेकर आए हैं? आज हमारे क्रिकेट में आप हर दिन सुनते रहते हो वर्कलोड मैनेजमेंट फॉर द बोलर्स, वर्कलोड मैनेजमेंट फॉर द बोलर्स. ये कौन लेकर आया है? ये भरत अरुण लेकर आया. भरत अरुण जब पहली बार वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में जिक्र किए तो बीसीसीआई को पता ही नहीं था. बोर्ड 2016-17 में इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं था. जब रवि शास्त्री कोच बनकर आए तो भरत अरुण को क्लीन चिट दिया गया कि हाँ जाओ, उनको वो बाढ़ बोल के बुलाते हैं, बाड़े, सो बाढ़ गो एंड डू इट. So that is what Ravi told Bharat, and Bharat devised this plan. Now let me tell you a story. Ishant Sharma is one of those players who used to bowl a lot ahead of every match. And Ishant Sharma ये Wasim Akram साहब से सीखा है. Wasim Akram used to bowl a lot. That was his technique, and Wasim Akram being Wasim Akram. And Ishant Sharma would follow Wasim Akram's advice. Bharat Arun went to Ishant Sharma and said, listen, I know Wasim Akram is the greatest of all time. I also know that when he has said you have every reason to follow him, but I am giving you a suggestion. Just try it out. Just try it out that for one game. Just try it out for one game. Do not bowl so much ahead of the match and hold back. And then go see if you are feeling fresher. Because that will be very interesting to see if you are feeling fresher. And Ishant Sharma actually tried this out. Ishant Sharma tried it out, and from then on, everybody got in a bind. Everybody got in a bind with this process, and workload management became the mantra of Indian cricket with Bharat Arun. Let me also tell you how Bharat Arun used to deal with. Suppose the bowlers did not have a good day. You know what Bharat used to do? He would take the bowlers and वो इकट्ठे बैठ जाते थे गेम के बाद इकट्ठे बैठ जाके उन्होंने बॉलर से पूछते कि अच्छा चलो बता दो, तो शार्दुल ठाकुर या मोहम्मद सिराज या कोई भी, कि आपने आज, भरत अरुण वुड नॉट टेल देम व्हाट द प्रॉब्लम इज. ऑल भरत सेड वाज, अगर आपने ये ठान लिया था कि मैं आउटसाइड ऑफ स्टंप ये बॉल डालूंगा और मैंने वही बॉल डाला, अगर एक बैटर बहुत ही अच्छा शॉट खेल के आपको बाउंड्री में मार दिया है तो वो बैट्समैन का क्रेडिट है. यू शुड आस्क योरसेल्फ, was I able to implement my plan? बॉलिंग रनअप में खड़ा होके वो सोचो, आपने जहां ठान लिया था कि बॉल वहां डालना है, क्या आपने ये किया था? और भरत मेरे को बताता है कि जब वो सवाल पूछते थे एक प्लेयर से, वो प्लेयर बोलता था कि एक्चुअली मैं तो आज सोचा था कि यहाँ इस ट्रैजेक्टरी में डालेंगे, बट जब मैं सोच रहा वो ट्रैजेक्टरी में तो मैंने डाला नहीं था. नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली सुधर जाता था एंड दे वुड पुट इन अ बेटर परफॉर्मेंस. सो भरत अरुण, एंड अगर आप हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा ये दोनों देख लें, भरत का वो इंटरव्यू भी जरूर सुनिएगा. भरत अरुण हैज हैड अ वेरी गुड इम्पैक्ट. ये जो हमारा फास्ट बॉलिंग क्रॉप है, ये जो हम 4-5 बॉलर से खेलना शुरू कर दिए हैं, भरत अरुण का इसमें जरूर योगदान है. सो आई एग्री विथ यू. हैविंग सेड दैट,
it is always the prerogative of the head coach. हेड कोच किसके साथ कॉन्फिडेंट है, किसके साथ उसका बनता है, किसके साथ ज्यादा अच्छा ट्यूनिंग है. फॉर एग्जांपल जहीर खान भी अप्लाई किए थे जब भरत अरुण कोच बने, क्योंकि रवि शास्त्री के साथ उनका एक अलग ही अटैचमेंट था. ऐसे बहुत बार हुआ है कि हेड कोच अपना खुद का चॉइस का एक बॉलिंग कोच लेकर आते हैं, बट भरत अरुण, मेक नो मिस्टेक, has the ability and the skill for the job. You can obviously see that with the Kolkata Knight Riders, where he has had a stellar season. So that was Bharat Arun. Coming back to the Virat Kohli point. See, my point is whenever it is a tournament like the World Cup, you should play a warm-up match. However good you are, and Virat Kohli is the best batsman in the world, no doubt, but you must play a warm-up match because that is why the warm-up match is there. You will be able to acclimatize. You know how you are pairing. Because when has India last played a T20 match? Tell me. Before the IPL, India played a Test series against England. When is the last T20 you played? Quite a long time back. All of a sudden, you are playing a World Cup, and in the World Cup, the only opportunity to gel as a team was the warm-up match. So, are you actually, do you know that okay, this is my best combination? This is how the combination will gel. I think, and this is my entirely my personal opinion, that you should go into the warm-up match with your first 11. So you actually know that, okay, this is how my players are shaping up. This is what it is like, because it's a very different country and very alien conditions. Rohan, I think there were two other questions you were flashing on the screen. If I could get them, please. Abhishek Bera, do you think spinners will be crucial in the World Cup based on the conditions in the US and Caribbean? I don't know the conditions in the US. Caribbean, from what our understanding is, Abhishek, if you see the Caribbean Premier League, mostly scores are between 180, 190, 160 to 180. हाँ, बारबाडोस में कई सारे मैच में 200 भी बने हैं, बट कैरेबियन प्रीमियर लीग अगर मैं देख लूं तो कैरेबियन प्रीमियर लीग के बेसिस में आपको ये कह सकता हूं कि स्कोरिंग जो है ये 250 350 तो होने वाला है. ये सब बेकार है. ये जो आईपीएल में 220, 240, 230 ये सब स्कोरिंग हो रहा था, ये सब नहीं होने वाला है. सो बेसिस दैट आई एक्चुअली थिंक इंडिया जो टीम सिलेक्ट किया है, इंडिया ने यही सोचकर सिलेक्ट किया है कि स्पिनर्स विल कम इनटू द पार्टी. अदरवाइज अक्षर पटेल का चयन होना अहेड ऑफ रिंकू सिंह या युजवेंद्र चहल का एक एक्स्ट्रा स्पिनर के नाते टीम में आ जाना शायद रिंकू सिंह के बदले नहीं होता. And by the way, I still feel Rinku Singh was hard done. मुझे ये लगता है रिंकू सिंह should have been part. Do you think? Yes. What was the question? Rohit Sharma. Do you think Rohit Sharma will be? All of us pray Rohit Sharma will be back in form. Ritam Banerjee. If Rohit Sharma is not back in form, Ritam, then India has got to. India will struggle. বাংলায় করো প্লিজ, ধ্রুব বাংলায় করবো. রেড স্পোর্টস বাংলাটা দেখো ভাই, রেড স্পোর্টস বাংলায় দেবাশিস সেনের অনুষ্ঠান দেখো, আমাদের অনুষ্ঠান দেখো, অগ্নি আর আমি এবিসি করি. আমি আজকে হিন্দিও করেছি. সো রেড স্পোর্টস হিন্দি, রেড স্পোর্টস ইংলিশ, রেড স্পোর্ट्स बांग्ला, ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स आर योर प्लेटफॉर्म्स. তোমাদের জন্যই করা, आप ही लोगों का प्लेटफॉर्म है. इट्स ऑल योर प्लेटफॉर्म. सो कम एंड सपोर्ट अस, because you know what, we will do multi-sport. Now, for the last 5 minutes of the show, I've answered enough of your cricket questions, right? I've answered about Virat, I've answered about Gautam Gambhir. Let me tell you this. Okay, last one. Amorto, ask Boria sir. Hi, in football, coaches under certification courses to qualify for coaching positions mandatory in Indian cricket? No. Now today you might come and say Gautam Gambhir doesn't qualify as coach. Why is he coaching? He's a mentor. But the fact of the matter is, look at when Ravi Shastri became the kind of coach of the Indian cricket team in 2007 for the first time when he supervised the team to Bangladesh. Did Ravi Shastri have a coaching degree? No. When Ravi Shastri became the coach, did he have a coaching degree? How many first-class teams had he coached? How many national teams had he coached? None. So if Ravi Shastri can do the job, why can't Gautam Gambhir? And by the way, if Gautam Gambhir has to teach somebody technicality, he's great, right? He is a sound player. If he has to show Yashasvi Jaiswal the technique, he will be able to do that. For me, it is more about man management and managing the dressing room, managing egos, and putting in that fearlessness that will come of use in a knockout game. हम लोग तो डर जाते हैं, हम लोग प्रेशर पे आ जाते हैं, हम लोग डरा हुआ क्रिकेट खेलते हैं आईसीसी सेमीफाइनल फाइनल में. गौतम गंभीर केकेआर के साथ हम लोगों को दिखा दिया है कि डरने से नहीं चलेगा, कैसे फियरलेस क्रिकेट खेला जाता है. दैट इज गौतम गंभीर, राइट?
Anyway, last 5 minutes. Please, folks, today at 3 p.m. Yes, Rohan, what are you talking about? অনেক কোয়েশ্চেন, আরে ভাই কোয়েশ্চেন আগে ওটা বলে দি ভাই, let me answer this please. We have launched a very special show. We have launched the promo at 3 p.m. today of a show called Grounded, and I will play this promo, Rohan, when I leave, so please get the promo ready. We have launched this show called Grounded with my colleague Gargi Raut. Gargi is a very bright kid who is doing fantastic work. Gargi has traveled to different parts of the country and has interviewed athletes on issues how to make a champion athlete, a champion mindset कैसे बनता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज, एक एथलीट कैसे ट्रबल से उभर कर बाहर आते हैं, कैसे वो जीतते हैं. उन्होंने जॉन्टी रोड्स, मोने मॉर्कल, मीराबाई चानू, मार्कस टॉयनिस, ये सारे प्लेयर्स से उन्होंने इंटरव्यू किया है. उन्होंने क्रिकेट किया है, हॉकी में पीआर श्रीजेश के साथ इंटरव्यू किया है, वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू के साथ, एथलेटिक्स में अंजू बॉबी जॉर्ज के साथ, क्रिकेट में जॉन्टी रोड्स और मोने मॉर्कल के साथ. सो सारे स्पोर्ट्स से एब्सोल्यूट चैंपियंस के साथ गार्गी राउत ने ये इंटरव्यू किया है और ये हम वीकली शो के नाते लॉन्च कर रहे हैं. ब्यूटीफुल प्रोमो, प्लीज गो एंड चेक. Produced by Trisha Ghoshal and edited by Orko Rudro. The promo is beautiful. A show by Gargi Raut. Very, very pleased with the show. We put out the promo at 3 p.m. The show promo, the first episode will be launched tomorrow at 12 noon. The first episode will be launched tomorrow at 12 noon of this special show, weekly show called Grounded, sponsored by Get a Fix and Lal Baba Rice. Gargi Raut brings in this new show. As I finish this broadcast, I will toss to the promo for you. Also, from tomorrow, we move our focus away from the IPL to, of course, the build up to the World T20, and we start what we call our football week. Our football week, because do not forget, 5 तारीख भारत पहला वर्ल्ड कप मैच खेल रहा है और 6 तारीख को हम फुटबॉल में कुवैत के साथ कोलकाता में खेल रहे हैं. अगेन फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का थर्ड राउंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच क्वालिफाई करने के लिए. सो उस मैच में पूरा देश सुनील छेत्री को सपोर्ट करेगा. उनका फेयरवेल गेम होने जा रहा है. क्राउड सपोर्ट तो बहुत ही रहेगा कोलकाता में. द टिकट क्रेज इज अनरियल. बुक माई शो में सारे टिकट्स बिक चुके हैं. वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच होने जा रहा है. उसका special build up of football week will also start tomorrow. So Grounded, a special show, football week with superb interviews. Now you can tell me whose interviews you want to watch from Indian football. Sunil Chetri's farewell match. Who do you want? You please tell us that. You want X player, you want Y player. Who do you want to listen from as part of this build up? You tell us and we will get you that player. We also launch our cricket coverage of the World T20, and on the 1st of June, our favorite Devashish Sen will travel to the United States with Ishan Shahane. So Devashish and Ishan from New York will be bringing us every update, regular updates, cultural tourism stories from Manhattan. And by the way, they will not go stand near the stadium and say Hardik Pandya pahunch gaya. That is not what we want. Those channels, the sports whatevers of the world, they are rubbish. They do not do any other sport. उनको पता भी नहीं है बाकी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में कौन सा खेल हो रहा है. आज बॉक्सिंग क्वालिफायर चल रहा है. निशांत देव क्या कर रहे हैं, अनुष्मिता बोरो क्या कर रहे हैं. आज से सिंगापुर ओपन चालू हो गया है. PV Sindhu, Lakshya Sen was up against Victor Axelsen. HS Prannoy is playing in that tournament. Satvik and Chirag are ranked the number 1 seed. When you are talking sport, talk comprehensive sport. Otherwise, do not call yourself a sports platform. Call yourself a cricket platform. That too, you are not even a cricket platform. You do not have the courage to send people everywhere you sit down and chat. That's what you do. So the last comment we will take. But as I said, from tomorrow, football week, from tomorrow, Grounded, from 1st of June, Devashish Sen, what he does best, what he loves to do, travel and cover the Indian cricket team with Ishan Shahane. Plenty coming to you on Red Sports. I'll take the last comment, end the show by tossing to the promo of Grounded. It's fantastic feedback for this particular show and I'm loving it. Meet Sony. 2014 final, batting se hare. 16 semi-final, बैटिंग फर्स्ट से हारे. 21 में न्यूजीलैंड पाक बैटिंग से हारे. 22 में हम साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल इंग्लैंड से बैट से हारे.
चेज में तो अच्छे है ही भाई, हारे, अल्टीमेट स्टोरी तो वही है। 2023 का फाइनल भी हारे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हारे। अरे यार, इतना आईसीसी टूर्नामेंट हार चुके हैं, वो डर जाते हैं हम लोग, और वो डरा हुआ क्रिकेट खेल लेते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि गौतम गंभीर जैसे किसी को आ जाना चाहिए, जो ये हारने वाला सिलसिला जो है, जो दिल का सिलसिला है, दिमाग से जो लड़ाई करके खेलो। ऑस्ट्रेलिया में जब पैट कमिंस का इस साइड के साथ खेलोगे ना, तो जिगर से खेलना पड़ेगा। वो हारने वाला मेंटालिटी से आप नहीं खेल सकते। Rev Sports is the best channel, covers every aspect of sports. I know that, Chavnik. You know why? Because we have people like you. We have supporters like you. We have fans like you. We have colleagues like you, because this is one movement. Rev Sports is a movement. It is by journalists, for journalists, and for people like you who love multi-sport. Whether it is weightlifting, whether it is boxing, whether it is badminton, whether it is athletics, whether it is cricket, whether it is football, comprehensive multi-sport holistic coverage, and not sensationalist junk. We do not stand for sensationalist junk here, that we will abuse someone and get TRPs. I don't even care. I don't even care, because ultimately it's about quality writing, it's about quality reportage, and it's about quality production. So look at our shows, look at our website www.revsports.in. Millions of views every month, because people come and read us. Some of the best writers of the country with breaking news features. Look at the interview that we've done with Bharat today. Read that. Look at the pieces that we've done today, and again multi-sport, the Nadal piece. Look at every possible sport. Today morning I've actually done a piece on Gautam Gambhir and Bharat Arun. Many such pieces every day coming your way, and from tomorrow, plenty of pieces on football as well. I'll end there. A 32-minute show flew past. I'll end with the promo. The promo of Grounded, like I said, produced by Trisha Ghoshal, video by Orko Rudra, and of course, anchored and hosted by Gargi Rao. Take a look at the promo of Grounded. We launch the show tomorrow. Grateful to Getafix and grateful to Lal Baba Rice for their support for this particular new show called Grounded. So keep watching us, subscribe to the channel, ring the notification bell, Rev Sports Bangla, Rev Sports Hindi, and Rev Sports English, and support Indian sport and join the Indian sporting ecosystem as a whole. Thank you very much for watching. Welcome to Grounded. I'm Gargi Rao. In the realm of sports, where often glory and despair dance on the same edge of a knife, I wonder, what does it take and what sets apart the greatest from the ordinary? Welcome to Grounded, where I take you on a journey into the depths of the human spirit, mental health in sports, and explore the psychology of greatness. I grew up with epilepsy as a young boy, and it was never a big issue because my parents never made it a big issue. But they weren't hiding the fact that I had epilepsy. It was just, they didn't make it a massive issue, but when I needed assistance, it was there. So I think, that the fact that there is a need and there are opportunities for players to get assistance, I think once it becomes a bit more accepted that, hey, you really can put the game aside and you need to be not just physically and skill-wise well prepared. Mentally and emotionally, you need to be strong too. Assistance, understanding, acceptance. These are not just words, these are lifelines. Just as jaunty roads had to navigate the challenges of epilepsy, it reminds us that mental health deserves the same acknowledgement and care. विलेज मतलब फैमिली से मैं शुरू हुआ हूँ, विलेज से ही। तो उसी टाइम में सोचते थे, बहुत सारे दिमाग में आते थे, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ते थे। तो फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मैं जो जा रही है तो कहीं पर कोई भी स्पोर्ट्स में, तो मैं उसी से पीछे मुड़ के नहीं देखना। From humble beginnings to the grandest